written by Anis Jem, right? So she's from Hyderabad, and her parents is also a writer, and she is an editor also, editor of which newspaper? Yes, Youth Times. It is not mentioned here. Okay, you can write down. Okay, Youth Times, and this story is divided into two parts. Number first part is sometimes I find a rupee in the garbage, and second part is I want to drive a car. Yes, and this is a small excerpt. What is the excerpt? A small part taken from a novel. Yes, a small part taken from a book or novel, you can say. So, which novel? Stories of Stolen Childhood. Okay, understood. So, this story is between the author and a boy whose name is Sahib. Okay. And who is the author? Yes. So, how the story starts? The story starts with the conversation when the author asks him, "Why do you do this?" So, I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging. Every morning, scrounging. Scrounging means searching. You can also say hunting, collecting. Hunting भी होता है. एक दूसरा meaning scrounging का. Okay. Scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Okay. And where is his home? His home is in Dhaka. Okay. Where is Dhaka? Bangladesh. Okay. So it is written here, Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. So, उनकी मम्मी ने क्या बताया कि किसी तूफान में उनके सारे घर वगैरह, खेत वगैरह उजड़ गए. Right? That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. Now, what is gold represents here? Coins, foods, okay, understood. But basically, the main representation of gold here is the coins, 1 rupee coin, 10 rupee coin, or whatever. I have nothing else to do. Then Sahib replies, I have nothing else to do. He mutters, looking away. Then author says, go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. Now, yesterday I have told you what's the meaning of glibly. He was very confident without Yes, speaking confidently without thinking. Okay. So what she says, go to school. Okay. Then he replies, there is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. ठीक है. जब एक बन जाएगा तो मैं जरूर उस स्कूल में जाऊंगा. ठीक है. Then the author again says, if I start a school, will you come? I asked, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? Okay. So, he is a very curious child, you can say that. Okay. He's a very curious child, and he asked her. A few days later, I see him running up to me. And with an embarrassment, she replies. What she replies? It takes longer to build a school. काफी शर्मिंदा हुई वो फेक प्रॉमिस करके वो. ठीक है. बट उसके बाद
ऑथर ने क्या बोला? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. एक स्कूल बनाने में काफी टाइम लगता है. I say embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like might abound in every corner of his bleak world. Bleak world means bleak world. उसकी उजड़ी हुई दुनिया में, ठीक है? Yes, in his empty world, okay. In his dark world, you can say dark, empty, hollow, okay. After months of knowing him, I asked him his name. फिर एक महीने बाद ऑथर ने साहिब का पूरा नाम पूछा, इस्लामी पूछा. So what's his name? Sahib Alam. He announces. Okay. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. So in his name there is an irony. Okay, in his name there is an irony, and the irony is his meaning of the name is Lord of the universe, but yes, Lord of the universe, but he is speaking garbage. Okay, क्या उठा रहा है वो? कूड़ा करवा रहा है, कचरा उठा, ठीक है? Lord of the universe, he would have hard time believing it. अगर उसको पता चल जाए उसके मीनिंग के नाम, तो बिलीव नहीं करेगा कि ये मेरा नाम. Okay. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. और एक महीने बाद वो सब उसके फ्रेंड्स वगैरह को जानने लग गई. Okay. Then afterwards, what she says to those children, that why aren't you wearing chappals? उनमें से एक को बोला. I asked one. So उनमें से क्या रिप्लाई करता है? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. शू रैक से या शेल्फ से नीचे नहीं निकालते, उनमें से ये एक्सक्यूज मांग, ठीक. देन नेक्स्ट एक और क्या बच्चा क्या बोलता है? इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. तो उसमें से एक बच्चा क्या बोलता है कि अगर वो चप्पल उन्हें उतार के दे दे, बट वो फिर भी नहीं पहनेगा, उसे फेंक देगा. बिकॉज देयर इज अ कॉमन ट्रेडिशन, राइट? चिल्ड्रन डोंट लाइक टू वेयर chappals. Okay. Okay. So when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy. उनमें से तीसरा बच्चा क्या बोलता है कि उन्हें जूते चाहिए. Okay. Who has never owned a pair all his life? जिसने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी जूते देखे भी नहीं होंगे. Okay. So, traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the city to stay barefoot in one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मतलब ये सिर्फ उनकी गरीबी का एक एक्सक्यूज है कि ये तो एक बच्चों का ट्रेडिशन है कि वो चप्पल पहनना पसंद नहीं करते. बट यूजुअली ऐसा होता है, राइट? बच्चे चप्पल पहनना पसंद नहीं करते हैं यूजुअली. ओके, इट इज नॉट बिकॉज लैक ऑफ मनी, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन दैट दे फॉलो. ओके, दैट द चिल्ड्रन फॉलोज. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड. फिर उसके बाद ऑथर को एक स्टोरी याद आती है जो कि कहां की होती है? उडुपी. ओके. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे एक पुजारी थे. ठीक है. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो वो किस चीज के लिए प्रे करते थे? शूज के लिए, कि उनको एक शूज मिल जाए. ठीक है.
30 years later, I visited his town and the temple. फिर 30 साल बाद उडुपी में ऑथर जाती है और विजिट करते तो क्या देखती हैं? Which was now drawn in air of desolation. ठीक है, मतलब अब वो जो मंदिर था वो लगभग एक खंडर बन चुका है. ओके, in the backyard where lived the new priest. अब एक नया priest आ गया था, नया साधु. Okay, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Okay, so you can say उनकी जो प्रार्थना थी 30 साल पहले की वो पूरी हो गई थी. ठीक है, 30 साल पहले वो जो प्रार्थना की थी उनने, अब वो पूरी हो गई है. बट उनके नहीं हुई है, बाकी और बच्चों के लिए हुई है. और वहां पे जो प्रीस्ट होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके लिए, सबके लिए क्या हो गया है? वो प्रार्थना पूरी हो गई. मतलब द प्रेयर हैज बीन फुलफिल्ड आफ्टर 30 years. Okay. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like rag pickers in my neighborhood remained shoeless. But वहाँ पे अभी rag pickers की बात हो रही है. ठीक है, वहाँ प्रीस्ट को तो, प्रीस्ट और प्रीस्ट के बच्चों को तो जूते मिल गए थे, लेकिन यहाँ पे रैग पिकर्स अभी भी शूलेस है. ओके, then my acquaintances with the barefoot rag pickers leads me to Simapur. Acquaintances means जान पहचान, परिचय करना. ठीक है, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapur, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. ठीक है, मतलब है तो एक एज में, लेकिन काफी दूर है. ठीक है, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Now, what is squatters? Yes, anyone? Migrants? Squatters. Okay. We can also say refugees. Okay. From Bangladesh who are living illegally here. ठीक है, illegal तरीके से वो लोग रह रहे हैं. ठीक है, who came from Bangladesh in 1971. कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से. कहाँ पे रह रहे हैं? सीमापुरी में रह रहे हैं. ठीक है, and when they came in 1971. 1971. Saib's family is among them. सीमापुरी was their wilderness. ठीक है, मतलब तब वहां पे जंगल हुआ करता था, जंगलात. ठीक है, it still is, but it is no longer empty. मतलब अभी भी जंगल है, लेकिन अभी empty नहीं. अभी क्या है उधर? Yes, in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. पहले जो वहां पे जंगल था, अब वो खाली नहीं है. That is not empty. अब क्या है उधर? कूड़ा, कचरा, ड्रेनेज सिस्टम, और प्लस उसके साथ क्या क्या है? 10,000 rag pickers. Right? They have lived here for more than 30 years. ठीक है, और कितने सालों से रह रहे हैं वो लोग? 30 years. 30 साल से भी ज्यादा साल. Okay. Without an identity, कोई भी आइडेंटिटी नहीं. लेकिन उनके पास क्या है? Without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. Okay.
अंडरस्टूड? उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, बट उनके पास क्या है? राशन कार्ड, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर फूड. यस, राशन, फूड, यस, राइट. ठीक है, तो राशन कार्ड उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट. ऐसे क्यों था? खुद भी रीजन देते, क्योंकि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी. उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था ज्यादा? फूड. ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो, उनकी पहचान इम्पोर्टेंट नहीं थी. उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था? खाना. ठीक है, फूड. यस. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Okay. तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि हम उस जगह ज्यादा रहना पसंद करेंगे जहां पे खाना मिलता हो, बजाय उस जगह के जहां पे खाना नहीं मिलता. तो उन्हें कहां से मिलता है खाना? सीमापुरी से. ठीक है, बांग्लादेश तो दूर है, लेकिन दिल्ली ही क्यों आए हैं? क्योंकि दिल्ली में, सीमापुरी में उन्हें इजीली खाना मिल जाता है. ठीक है, राशन कार्ड उनके पास. ओके, सो राशन कार्ड में इजीली खाना मिल जाता है, प्लस रैक पिकिंग करते हैं. रैक पिकिंग कुछ पैसा वगैरह मिल जाता है. दैट्स व्हाई दे आर देयर. ओके. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. और ये कौन बोलता है? Say a group of women in tattered sarees. Tattered sarees means फटी हुई. ठीक है, torn, फटी हुई साड़ी. ठीक है, जिसमें छेद वगैरह होते हैं, फटा हुआ है. ठीक है, tattered sarees. When I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers. जब ऑथर पूछती है कि आपने इतनी सुंदर जगह क्यों छोड़ी. ठीक है, एक तो सबसे पहला रीजन, वहां पे तूफान आ गया था, राइट, और उनके घर वगैरह उजड़ गए थे, घर खेत वगैरह उजड़ गए थे. एंड द सेकंड रीजन इज द फूड. ओके, द सेकंड रीजन इज फूड. ओके, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहां पे भी उन्हें खाना मिलता है आसपास सीमापुरी में, वहां पे वो अपना टेंट लगा देते हैं. ठीक है, और वहीं पे उनका एक ट्रांजिट होम. ट्रांजिट होम मीन्स टेम्पररी. ठीक है, यस, टेम्पररी होम. ओके. Children grow up in them becoming partners in survival. और यहाँ पे बच्चे भी जो है उनके सर्वाइवल में एक तरीके से पार्टनर बन जाते हैं. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ, ठीक है, किसके लिए फाइट कर रहे हैं? फूड के लिए. ठीक है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. ओके, और सर्वाइवल उनका कैसे होगा? सिर्फ रैक पिकिंग. Okay. Through the years, it has acquired the proportion of fine art. और उनके लिए एक किस चीज का दर्जा था? एक फाइन आर्ट का. मीन्स जिसे रैक पिकिंग अच्छे से आती थी, वो एक आर्टिस्ट था सीमापुरी. ठीक है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड. और उनके लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड. इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज लीकिंग roof, but for a child it is even more. फिर शायद क्या बोलता है? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Okay, 1971 से 30 साल बाद की बात हो रही है. ठीक है, तो मतलब 2000 या 2001 या 5 के बीच में. ठीक है, इसी के बीच में बात हो रही है. ओके, यस. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर अ बॉय 1 रुपए और 10 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, यस. ओके, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज. हिज आईज लाइटनिंग अप. और जब उसे मिल जाता था वो काफी खुश हो जाता था. ठीक है, देन फर्दर ही सेज, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज. ओके, एक पूरे कूड़े के ढेर में अगर आपको एक कॉइन मिले तो क्या होता है? यू डोंट स्टॉप काउंटिंग
for there is hope of finding more. So it is not like that they stop finding more coins. Okay, it is a motivation for them to find more coins. Okay, it is a motivation for them कि ऐसा नहीं कि 1 रुपए कॉइन मिला या 10 रुपए का नोट मिला उसके बाद वो रुक गए, बट इट इज अ मोटिवेशन फॉर देम टू फाइंड मोर कॉइन्स. ओके, it seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. Okay, for the children it is wrapped in bundle. Children के लिए क्या था? एक बंडल. ठीक है, आश्चर्य की बात थी. ठीक है, मतलब दे फाइंड एंजॉयमेंट लाइक इट देयर ट्रेजर हंट हो रहा है. एक रुपए का कॉइन मिल रहा है, 10 रुपए का नोट मिल रहा है, ट्रेजर हंट हो रहा है. और फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. एल्डर्स के लिए क्या था? इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. फिर वहां पे क्या देखता है साहिब? टेनिस खेलते हुए कुछ लड़कों को देखता है. ठीक है, और क्या बोलता है ऑथर से कि मुझे ये गेम पसंद है. ठीक है, okay, I go inside when no one is around. He admits. और वो क्या बोलता है? जब कोई भी नहीं होता उधर तब मैं उस टेनिस कोर्ट के अंदर जाता हूँ. ठीक है, the gatekeeper lets me use the swing. Swing means यहाँ पे एक झूला है. ठीक है, तो गेटकीपर है, स्विंग यूज करने देता है उसको. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. ठीक है, वो लोग जब जूते पहनते दैट इज अ यूनिफॉर्म फॉर देम. ठीक है, एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है उनके लिए. बट यहाँ पे साहेब ने क्या पहना था? वही व्हाइट शूज पहने हुए थे बट विद अ डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. तो क्या बोलता है साहेब? वो शूज कहां से मिला उसे? ठीक है, समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कि किसी ने उसे दिया. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम rich boy. Okay, it was a discarded shoe of a rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole. क्योंकि उसमें छेद था इसलिए उस रिच बॉय ने उस शू को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब फेंक दिया. ठीक है, और साहिब ने उस शूज को पहन लिया, मतलब रख लिया. Because of a hole in one of them does not bother. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. ओके, जिसमें जो हमेशा नंगे पैर चला चाहे उस शू में एक छेद क्यों ना हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात. इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. पहले उसने बोला था कि मेरे को ये गेम पसंद है. एक्चुअली वो गेम के लिए नहीं, वो किसी लेफ्ट ओवर के लिए, क्या पता शूज कोई रख दे, फटे हुए शूज, कपड़ा कोई रख दे या कोई शॉर्ट्स रख दे, वो उस चीज के लिए वेट करता था. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको किस में एंजॉय होता था? स्विंग. ठीक है, ओके. देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड? आफ्टर फ्यू टाइम्स दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. ठीक है, दूध की दुकान में. ठीक है, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में या कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्पेसिफिकली मिल्क बूथ होते हैं. ठीक है, मदर डेयरी के, अमूल के, दैट इज मिल्क बूथ. ओके, इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. ओके, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. तो वो अब कहां पे काम करता है? एक टी स्टॉल में काम करता है. ओके, he says, pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my needs. अब उसको कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपीज. 800 रुपए. ओके, नो, नॉट पर डे, a month. Not per day, a month. Okay. Then
The author asked, what she asked, does he like the job? I asked. His face, I see, has lost the carefree look. Carefree look means tension free look. अब उसके चेहरे में नहीं था. ठीक है, अब उसके चेहरे में टेंशन भरी हुई थी क्योंकि वो जॉब कर रहा था. ठीक है, टेंशन क्यों थी? लेट्स सी. ओके, द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag. जो स्टील कैनिस्टर था, जो बड़ा प्लास्टिक बैग पहले उठाता था, जो कि भारी था. ओके, बट स्टील कैनिस्टर उसे भारी लग रहा था. क्यों? The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. जो प्लास्टिक बैग था वो उसका था. ठीक है, लेकिन जो ये the canister belongs to the man who owns the tea shop. शायद is no longer his own master. क्यों वो भारी लग रहा था स्टील कैनिस्टर? Because शायद, yes, वो किसी और का था, and शायद is no longer his own. So this is the first part of the story. Okay, we will do the second part later. Okay. Thank you, class. Thank you, sir.